Assalamu alaikum readers and viewers, this is Mashal from the desk of CEO at Runway Pakistan Studios. Today we have a very versatile personality and a very humble individual, Miss Farhat from Bulk Management Pakistan, and today she is going to share her entire journey being a disabled child from to the corporate sector director as well. Thank you so much for coming at our studios and you gave us the chance to interview such an humble personality जो सिर्फ दूर दूर तक उड़ती उड़ती सिर्फ सुनाई देती थी लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी. Thank you so much for contacting me. It's an honor for me as well. Okay, so Farhat, a little bit introduction about yourself to the viewers जो आपको नहीं जानते, जो कंपनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता. अच्छा माशा, बेसिकली आई एम अ व्हीलचेयर बाउंड गर्ल बाय बर्थ, लेकिन मैंने कभी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी नहीं किया. एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर व्हाट आई हैव rather than depending on what I don't have. So I have been blessed with a wonderful family, mashallah. But you know, being in Pakistan, एक बहुत बड़ी limitations ये थी कि एक barrier अभी भी थोड़ा बहुत है कि स्पेशल लोग जो है ना वो स्पेशल एजुकेशन नहीं करें, नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जाएं, और प्लस इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे कंपेयर टू अब्रॉड. But my family, I would say my parents, my grandparents, my uncle, they ensured to give me a normal life. So they kept on knocking the doors of different schools, and fortunately I got admissions in normal schools, which was a little challenging. Although I would say that I was being blessed with a family, a very open-minded family, plus I had no financial issues. But वही बात है कि एक जब बैरियर होता है, एक स्पेशल बच्चा हमारे स्कूल आएगा तो उसको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, और मे बी वो कोप अप कर पाए या ना कर पाए, बिकॉज यहाँ पे मेंटल कैपेसिटी लोग नहीं देखते. बस कुछ भी अगर लिमिटेशंस होती हैं तो वो डोर्स क्लोज हो जाते हैं. बट वही बात है, अगर नीयत साफ़ होती है, जस्तजू होती है, डेडिकेशन होती है, तो रास्ते अल्लाह ताला बना देता है. So I did my O levels from the CS schools, A levels from Foundation Public School. Really? And then BB honors and MBA from Institute of Business Management. I'm also a gold medalist in MBA marketing. So it was a challenging journey, but alhamdulillah I achieved all that stuff. So it had a great time. And then of course जब इतना पढ़ लिया, इतना आगे कर लिया, तो it was a dream like every other student for me as well to work in a multinational. Okay. So again, when my friends had a lot of options to apply in different companies, I had very few options because every day कहीं stairs उठना करना इतना आसान नहीं था. And जो मेरी upbringing थी was ये थी कि I lived independently as much as possible. And when I applied at Unilever Pakistan Limited, I was fortunate to get... Hang on, what did you say? Come again, you said Unilever Pakistan. Yeah. Okay. So when I applied there, as a student, I was hesitant that, you know, it's very challenging to get there. But fortunately, I got in there. Okay. And the best thing I liked was when, in the interview, my final round, when the chairman of Unilever, Hassan Malik, said that I am hiring you because I know your abilities. I'm not hiring you because of your disabilities. So which showed me that there are no sympathies. Yes. And he's and a lot of me, confidence you gained that he's moment. hiring me for what I am. Yeah. So a struggle of 24 years, which I went through, like, you know, along with my treatments, the journey of my schooling, then, you know, because, you know, society हमारी इतनी conservative है कि we keep on hearing taunts and we keep on hearing sympathies, which are not required. And when you achieve something, you feel that, you know, you have done it. And it was always my endeavor कि मैं अपनी achievements में लोगों को prove करके दिखाऊंगी. And then slowly and gradually, all the sympathies got over. Okay. Because with sympathies, people started admiring. Because of your hard work, the confidence within yourself. In spite of all the limitations, you know, I did my education, I was working. So alhamdulillah, that barrier was crossed. It's crossed. And this is the thing which I will always say, that never give up. Never give up. Yeah. Okay. So what made you start this brand Shahenshah? And what was your vision behind it? As I mentioned that I came from Unilever Pakistan, I joined my own family business, and when I came here, we were a trading company. So we used to trade edible oil, and हम लोग bulk में export करते थे rice. So my uncles Rasheed Muhammad and my dad Rasheed Muhammad, they said that when you join our company, we want you to do something new.
एंड आई हैड ब्रांड एक्सपीरियंस, मैं एक ब्रांड मैनेजर थी, मार्केटिंग मैंने बहुत की थी. So they encouraged me to do something, start something new and exciting. So we used to export rice in bulk. तो मैं कहा ठीक है, since we had that plant and capacity, so we will launch a rice brand. But you know, I can understand that in a trading company, it is very challenging to launch a brand. Okay. Brand has a lot of nitty-gritty, supply chain issues, you know, marketing वगैरह. तो यहाँ के लोगों को ट्यून करना, उसका सेटअप करना, फिर नए लोग हायर करना. So it was interesting and something which I initiated myself. So as I had a dream कि you know मैं इसको penetrate करूँगी पूरे कराची में, and then ऐसे लेके to कराची और इस्लामाबाद, और हम फिर इस ब्रांड को एक्सपोर्ट भी करेंगे बाहर. So alhamdulillah, I'm happy कि we made a change in the company. So since how long you've been associated with शहंशाह? इस कंपनी को ज्वाइन हमें मुझे किए हुए 6 years हो गए. शहंशाह लॉन्च हमने 5 years पहले किया था. Okay. So and today mashallah it's available in Karachi, Hyderabad, Thatta, and plus we export our rice to Dubai, Malaysia, Africa, and What's so Kenya. special about this rice? Rice, no, I'll be, you know, it's very exciting that when I was a kid, हम सिर्फ rice खाते थे. So I never knew कि इतनी सारी varieties होती हैं, क्या होता है. So but when I went into this business, it's like, you know, it's a long grain rice, ठीक है, and हमारे यहाँ पंजाब में crop बहुत अच्छी आती है. Okay. So I send my team to Punjab, वहाँ से लोग procure करते हैं, और हमारी अपनी rice processing plant at Port Qasim. So वहाँ हम उसको processing करते हैं, polishing करते हैं, packaging करते हैं, to ensure the quality is maintained, the packaging is properly packed and everything. So and today we have 8 different types of variety of rice. 8 different varieties. So उसका मेन मकसद ये था to target all income brackets. और प्लस हर घर में अगर आप देखें तो चावल 2 टाइप्स के आते हैं. प्रीमियम भी आते हैं फॉर बिरयानी, पुलाव, सरदा, ठीक है, और दाल चावल के नॉर्मल आते हैं. दाल चावल के नॉर्मल आते हैं. सो यू नो टू केटर ऑल वेराइटीज, टू केटर ऑल इनकम ब्रैकेट्स, तो हमने इस तरह से सारे प्राइस रेंजेस, सारे ब्रैकेट्स के राइस निकाले. सो या इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट्स नाइस थिंग टू डू. Okay, moving on to the next question. What is the biggest strength of शहंशाह at this moment in the market? Biggest strength I can see is our quality. We do not compromise on quality at all. And I've seen कि लोग थोड़ा सा you know price कम करने के चक्कर में मिक्सिंग कर देते हैं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, एंड देन जैसे कि चावल है you know with मसाला देन एवरीथिंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. But I've seen that housewives are really sharp at this. उनको पता होता है कि वो कौन सा चावल किस तरह से बना रही है, और वो बहुत अच्छी जज होती हैं. So I would always want to develop a trust between my customer and us, or I would never compromise on quality for the pricing. तो हम इंश्योर करते हैं कि हमें कभी भी कभी नेवर गॉट क्वालिटी कंप्लेंट्स. एंड सेकेंडली हमारी एक और प्रायोरिटी होती है कि हम कस्टमर को डिलीवर ऑन टाइम करें. हम कभी डिलीवरीज में लेट नहीं करते, बिकॉज ऑफ कोर्स डिलीवरी टू स्मॉल स्टोर्स यू नो हो जाता है अचानक ऑर्डर. इट्स नॉट दैट ईजी सप्लाई चेन मेंटेन करना, बट वी इंश्योर टू डिलीवर ऑन टाइम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टू मेंटेन क्वालिटी. ये 2 बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, एंड आवर एंटायर टीम, द एंटायर कंपनी नोज अबाउट इट. We would never ever compromise on delivery timelines and the quality. Professional life, we all know about anything you're doing socially or anything besides the professional life, being an individual yourself. The professional life, I guess, सभी करते हैं because everyone you know earns to have the livelihood and that's part of everyone's life. मेरा एक passion हमेशा रहा था to do something for others. और मुझे तक जितनी difficult journey मेरी रही है, I wanted other children to be you know live a more comfortable life. And since I said that I had all means, a good family support, so I aim to be the voice for special children, and that's how I initiated a group named Show You Care. Show You Care का main मकसद ये था कि हम awareness create करें regarding acceptability of special children and accessibility. मतलब कि जहाँ भी हम जाएं वहाँ access हो. यहाँ पे कितनी जगह हैं जब पार्किंग साइंस की व्हीलचेयर साइंस नहीं होती, बड़े वॉशरूम्स नहीं होते. यहाँ पे फ्रेंचाइजेज आई जो सेम रेसिपीज़ होता है, सेम आर्किटेक्चर होता है, बट उसका बेसिक चीज़ आप भूल जाते हैं कि आप रैंप एलिवेटर्स नहीं कर सकते. आई यूज्ड टू गो टू लॉट ऑफ सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट्स एंड आई यूज्ड टू सी सो मेनी किड्स यू नो गोइंग टू थेरेपीज एंड एवरीथिंग. But when I used to go out, so of course at a young age you don't know what's happening that much. So I used to feel कि I am the only one in Pakistan जिसको ये problem है, and I used to feel really you know sad at times. But then I realized कि नहीं, there are a lot of kids लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते.
Yeah. A little bit of encouragement and motivation can It's make all a about the child do positive wonders. energy you have within yourself. Yeah, and I always believe that special children are not disabled, they're differently able. They can do everything in a very unique manner. They have the talent. Can I use this line as a tagline of your? Yeah, I always say that differently abled. They Yes. do everything in a very, very unique manner. तो फिर हमने ये कैंपेन ड्राइव स्टार्ट की एंड आई ऑलवेज डू साइड बाय साइड. हमने बहुत से सेमिनार्स किए, लूज टॉक किया. आई हैव कॉल्ड आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, सेलिब्रिटीज़, वी हैव कंपेयर्ड लॉज कि वहाँ पे अब्रॉड USA UK तो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि आई कैन इवन सू द ओनर कि आपने मुझे बेसिक ह्यूमन राइट क्यों नहीं दिया टू मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली. And that's where I see people shopping around on the roads everywhere independently. But if I compare to Dubai, Malaysia, Singapore, जो डेवलप हमारे बाद हुए, even they have access, so why not Pakistan? और हमारे यहाँ भी लॉ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेनल्टीज नहीं है. Yes. पाकिस्तान में पेनल्टी के बगैर तो काम कुछ भी नहीं होता, तो वो लोग बाईपास कर देते हैं, चलता नहीं है. So I believe we all have the right You to one live. of the biggest example, Muniba Mazari. Yeah, of course. तो ये बाद में एक्सीडेंट से हुआ है. कोई लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है, उसके पास ऑलरेडी इतना फाइनेंशियल प्रेशर है और उसके चैलेंजेस और ज़्यादा हैं, ठीक है. और अब वो एक मदर, आई ऑलवेज बिलीव अ मदर डज एवरीथिंग फॉर अ चाइल्ड, because I've seen my mother being there for me till to date. So she has been stayed up late nights for me when I used to study, और हमेशा, although I had maid, but she never left me in a maid's hand as well. She used to ensure कि वो मेरी हर चीज़ खुद personally करें. My parents used to feel कि फरहत घर आके upset होगी, mentally all right है, समझ सकती हैं, but they never stopped me from going outside because they knew one day she'll get immune to it. And today they are confident, they know कि वो सुना के आ जाएगी. अगर उस बिल्डिंग में रैम्प स्टेयर्स नहीं होंगे तो वो सुना के घर आ जाएगी, लेकिन अपसेट होके नहीं आएगी. एंड शी विल इंश्योर कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हो जाए, बिकॉज एक चैलेंज है जो अल्लाह की तरफ से आया है. इट्स एन एग्जाम, आई वुड से. जिंदगी एक इम्तिहान है. हाउ गुड यू पास योर नंबर्स. इट्स अ टेम्पररी फेज ऑफ जर्नी. सो इट्स एंड आई फील कि जब अल्लाह ताला कोई एक कमी देता है तो दो खूबियाँ दे देता है. ऐसे ही अब उस दो खूबियों को आपको ढूंढना है कि आप में क्या है. So you believe in yourself, you believe in your capabilities, and then मुझे हमेशा ये रहा है कि जब मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, so I have to make them proud, I have to make them happy, because I've seen the struggle. And हर स्पेशल बच्चा, I would say कि शुरू के 10 to 15 years are pretty difficult. Because एक पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट डाइजेस्ट करना होता है प्रॉब्लम. फिर डिजीज़ के बारे में जानना, पाकिस्तान इतना आगे नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, ट्रीटमेंट्स वगैरह करना. एंड आफ्टर अ सर्टन एज वो कंडीशन थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है, या यू अडॉप्ट टू व्हाट यू आर. तो ये तो इस तरह से डिफ़िकल्ट जर्नी ज़रूर होती है, बट अगेन इम्पॉसिबल नहीं होती. वी हैव अ हॉस्पिटल, खारदा जनरल हॉस्पिटल. खारदा जनरल हॉस्पिटल. मेरे ताया बशीर जान मोहम्मद उसको लीड करते हैं. उन्होंने वहाँ पे एक थेरेपी सेंटर मेरे नाम से खोला है, फरहत रशीद रिहैबिलिटेशन सेंटर, FPRC के नाम पे. तो वहाँ हम लोग बिल्कुल बेयर मिनिमम कॉस्ट पे ट्रीटमेंट कराते हैं, बिकॉज वो खारदर लियारी के बच्चे आते हैं वहाँ पे. और ये ऐसी चीज़ है जिसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते. तो जो बहुत नीडी होते हैं उनको कभी कभी हम लोग बिल्कुल ज़ीरो भी कर देते हैं या बहुत ही लो कॉस्ट कर देते हैं. तो वहाँ मेरी आदत है कि आई गो एंड स्पेंड टाइम विद दीज किड्स. आई टॉक टू द मदर्स, आई एनकरेज देम to like never to give up, and this child can Can make do you wonders. proud. You never know anything. Okay. और अब I would say कि जिस तरह मेरा ग्रुप शो यू केयर है, इस तरह कुछ और भी सोशल ग्रुप्स हैं, NGOs हैं. So show you care को कितना टाइम हो गया फरहत? 10 years हो गए. 10 years and you were slowly running it yourself? Yeah. ये it's my passion. It's a long term goal. Changing Pakistan instantly is not that easy. So I would request all the viewers के show your care को support करें, और जो चीज़ फरहत कर रही हैं, being what she is at the moment, उससे ज़्यादा अच्छा आप लोग खुद कर सकते हैं किसी और के लिए. So please support her cause and please support everyone's children. Besides this, who's your biggest inspiration and the mentor throughout your life, throughout your journey? Inspiration में I would say कि I met this person, Sarmat Tariq. He passed away a couple of years back. वो मुझसे बड़े थे, and he was a quadriplegic, a wheelchair bound person, और एक accident में वो wheelchair bound हुए थे.
So I used to admire him a lot when I was very young because he did his education, फिर वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे. He was a motivational speaker. जब मैंने शुरू किया काम शुरू किया, so I called him कि आप एक motivational talk दें मेरे सेमिनार में. अच्छा, I was good at arranging the events, doing all the back-end work and everything. I was the brainchild behind it. Okay. But मुझमें उस वक्त इतना confident नहीं था in terms of speeches. But उस दिन of course मेरी family मुझे encourage कर रही थी कि it's your function, it's your event, go and speak your heart out. So I was like ठीक है. अच्छा, अब मैं सरमद तारिक साथ थे. I was so happy he came from Islamabad. जो इस्लामाबाद भी. कितनी पुरानी बात है ये हमने किया था around 5 years पहले. 5 years. 12 years पहले. 12 years हाँ. पहले. Okay. So he was sitting with me and he was like, "Are you tense?" I'm like, "Yeah, a little." Because I just think that सारी audience जो है ना वो बहुत stupid है और उनको कुछ नहीं पता और तुम्हें सब पता है because you have done this event, you know about it and you can feel about this cause. Yeah. So go on the stage and speak your heart out. Don't think about people's stare या how people think about what you are saying, what you're not saying. और relax होके speech दे क्या कुछ भी नहीं होगा. I was like okay, and I was having a smile on my face. The way he said कि think the audience does not know everything and you know everything about what you're saying. So bas and then I started speaking and I was surprised. I was very relaxed and लोग चले जाते हैं, आधे छोड़ जाते हैं. तो बहुत अच्छे थे. Plus in my family I would say कि my parents played a very important role. My mom was there for a personal care. My father was there in taking me out, exposing to outside world. Plus then we live in a joint family. So my uncle, Mr. Rasheed, he was always, he does a lot of social work. He does a lot of things for society. तो मैं उनसे बहुत inspired हुई and I was like, I should do something for the others. Because आपकी real satisfaction और real satisfaction जो happiness होती है is when you see someone smile. Yes. If I can make one person smile, I would say I've achieved my thing. You did. Yeah. You did. I'm smiling actually while interviewing you. So that's the best thing because काम तो हर रोज की दौड़ में सब busy हैं. Everyone's life is very important, very very busy and hectic. My last question would be anything you would highlight about the leadership skills which you have, you would like to give opinion to anyone or any suggestion you would like to highlight? Leadership में I would say that to believe in your capabilities, never underestimate yourself. And even if you fail, I feel every failure gives you learning. And there is a day when you do stand up. And whenever you stand up, you always be who you are. And always, be there for others. Plus, for special children, I would say they're not special, they're differently abled. They're very unique and वो सब कुछ दुनिया में कर सकते हैं. तो मैं उन सब बच्चों से ये बोलूँगी कि अपने आप पे बिलीफ रखें, स्ट्रॉन्ग रहें, एक विल लाएं कि वो दुनिया में सारे काम कर सकते हैं और कभी किसी की सिंपैथी से परेशान ना हो. और मैं हर पेरेंट को भी ये कहूँगी कि वो आपका डिफरेंटली एबल चाइल्ड वुड रियली मेक यू प्राउड ऑलवेज. बट ये है कि यस, अ लिटिल मोटिवेशन, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड and then that child can do wonders.